This is the story of the most mysterious stone in the world, a 1,000-year-old levitating Jyotirlinga that disappeared after a horrific invasion, lost, forgotten, until now. After centuries of secrecy, we're about to reveal what no one believed was possible. How was it found? Why is it so unique? And how, after 1,000 years, did it reach Gurudev? According to ancient Hindu scriptures, the Somnath temple wasn't just any temple. It was the first Jyotirlinga, the holiest of the 12 sacred shrines dedicated to Lord Shiva, said to be built in the Satyuga by the moon god Soma himself, and Lord Krishna had done penance here. The Shivling housed within the temple was unlike anything ever seen. It defied gravity. Hovering in midair, held by a powerful magnetic force, it was a source of faith and devotion for millions. But its power, its significance, made it a target. In 1026 AD, Mahmud Ghazni led a brutal invasion. Wave after wave, his forces stormed the Somnath temple, massacring thousands, looting its sacred treasures and shattering the sacred Shivling, leaving behind devastation and heartbreak that echoed for centuries. The Jyotirlinga was thought to be lost forever. After the Somnath temple was destroyed, the Agnihotri priests secretly collected the shattered pieces of the sacred Shivling, shaping them into smaller Shivlings, and made it their life's mission to protect them at all costs. For nearly 1,000 years, they kept it hidden and passed it down through generations. No one outside the family even knew. They performed rituals daily, waiting for the day when they could reinstate the Jyotirlinga in its rightful place. The priests worshipping the Shivling fragments noticed something amazing. The stones were magnetic. Maybe this held a clue to how the original Jyotirlinga levitated. Scientists ran some tests on the stones and the results were mind-blowing. I have not seen any whitish rock having a magnetic property. Firstly, it's super magnetic, but its magnetic field isn't at the poles like a normal magnet. It's centered right in the middle. Scientists were shocked because they've never seen anything like it. And it gets even more interesting. This stone has almost no iron, which is crucial for magnetic properties. Scientists were baffled, as no substance on Earth exists with this composition that displays magnetic properties. The iron content is 2%, but I am unable to explain why it is so, but there is definitely magnetic. There is no doubt about it, because I just now checked up with the magnet. It is magnetic. Ancient Indian scriptures have described such a material that actually came from outer space. In 1924, the Kanchi Shankaracharya instructed the priests to keep the Shivlinga hidden for 100 years. The Shankaracharya asked the priests to give the Shivlinga to Gurudev Sri Sri Ravi Shankar in Bangalore. That moment finally arrived in January 2025. Sitaram Shastri, the last custodian of this sacred legacy, made the journey to meet Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, and he handed over the Shivling fragments to him. उन्होंने बोला, ये काम करने के लिए योग्य एक महात्मा है, उनके पास जाओ। ऐसा बोल के मुझे भेजा है, इसलिए श्री श्री रविशंकर जी के पास मैं आया हूँ। This Mahashivratri, the original Jyotirlinga will be revealed to the world for the first time in a millennium at the Art of Living Bangalore Ashram in the presence of Gurudev. After 1,000-year wait, devotees will finally have the opportunity to witness the power and divinity of the Jyotirlinga and seek its blessing. Come be part of history. ऐसे सौराष्ट्र के जो ज्योतिर्लिंग है वो सबसे पहला नाम आता है। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्री शैले मल्लिकार्जुनम, इस तरह से हमारा होता है। तो वो सौराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग को जो उन्होंने तोड़ डाला कि वहां के कुछ अग्निहोत्री लोग उस वक्त वहां थे दक्षिण भारत से,
जहाँ हमारा जन्म हुआ उसके बाजू के ही एक गांव के कुछ अग्निहोत्री लोग वहां से उस शिला को लेके चले गए और उन्होंने अपने घर पे उसको पूजा करते, उसको शिवलिंग की आकार दे दी, उस ताकि वो टुकड़े टुकड़े थे उनको शिवलिंग का आकार दे करके उसकी पूजा करते रहे। 100 साल पहले जब माने 1924 में उन्होंने शंकराचार्य महाराज जी से, दक्षिण के शंकराचार्य जी से जाके कहा कि इसको हम क्या करें। उन्होंने कहा और 100 साल तक इसको तुम यहीं रखो, बाहर मत लेके आना। फिर उन्होंने कहा 100 साल के बाद राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद इस तरह से दक्षिण भारत में एक संत होंगे, शंकर जी का नाम होगा, उनके पास जाके दे देना। तो वो परिवार के जितने पीढ़ी दर पीढ़ी उसको रखे आए। अभी जनवरी 15 को वो लोगों ने उस सोमनाथ महाराज जी को, शंकर जी को लेके आए। हमने कहा सोमनाथ जी का दर्शन सबको कराएंगे। अब इसकी विशेषता देखिए, इसमें चुंबक शक्ति है। मैं आपको ये ताली में दिखा दूंगा। इसमें दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है क्या? हाँ, स्क्रीन है, दिख रही है? देख रहे हो आप? फिर ये जम इंस्टीट्यूट जियोलॉजिस्ट ने देख करके बोले इसमें 140 गॉज है। अक्सर 7, 8, 10 गाज से ज्यादा कहीं नहीं होता मैग्नेटिक पावर। और वो मैग्नेटिक पावर होता है वो छोर में होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मगर इसमें इसके बीच में है। फिर इसमें आयरन नहीं है, माने लोहा इसमें बहुत कम है, 7% है। जब इसको इन्होंने शिवलिंग बनाया तो इसकी इसके जो टुकड़े थे, पीसेस थे, उसको उन्होंने एनालाइज किया लैबोरेटरी में। उन्होंने कहा ऐसी मटेरियल हमारे दुनिया में कहीं नहीं है, ये अद्भुत किसी दूसरी दुनिया से आई है ये। इस बात को हमारे वैज्ञानिकों ने बताया। ये और चौंकने वाली है, क्योंकि सोमनाथ जी का इतिहास ही यही है। चंद्रमा ने सोमनाथ जी का पूजा करी तो सोम माने चंद्र, चंद्र के नाथ है सोमनाथ। तो ये शिवलिंग अभी प्रकट हुए। अब आपने देखा शंकर जी का आपने दर्शन कर ली। अब पूरे देश इससे लाभान्वित हो। हमारा वो है विचार ये है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे और आप उसको वहाँ सौराष्ट्र के जो सोमनाथ मंदिर में पुनः स्थापित करेंगे। ऐसा होगा, आगे विचार होगा। शंकराचार्य जी महाराज भी साथ में आएंगे। सारे देश के संत, सारे देश के भक्तगण, आस्तिक महाजन, सब लोग मिल करके इसको उत्सव मनाएंगे, ऐसा हमारा विचार। It is said that the Somnath Jyotirling was consecrated by the moon god himself. Can you tell us more about it? It sounds very mystical and fascinating. Yeah, let the mysticism be mysticism. Don't try to understand, don't demystify it. Yeah, it said it is from some other place, some other planet, some other world that this lingam was brought here, Somnath. And geologists support that idea.
But that is so thrilling, exciting to see. We want to keep 2 in the ashram permanently. We have some pieces, make a nice place for it, and we'll create 2. And 2 will take back to Somnath from where it came, to Gujarat. And then the rest I won't tell you now where it